Hi everyone, how are you? Okay dears, welcome to our RANA SIR educational channel. Today I will talk about vector analysis, but in this chapter I will explain a particular topic whose name is vector product or cross product. So this is very important. So this topic each and every student has to concentrate to know from starting to end. That is, each and every student need to observe this live video from starting to end to the vector products, and also that is, in other words, we can say that cross product of two vectors. Okay, so that concept I will explain here in detail. Therefore I am saying you also like this live video and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also improve their knowledge on this topic, and simultaneously you also subscribe this educational channel. Now here I am going to tell you one suggestion point, and that suggestion point you follow positively. First of all, you have to take one notebook and one pen, and then you have to write the information on your notebook from the blackboard, data which will be written from the blackboard, and also data which are spoken by me. So positively I am going to start this live video. Okay, so you concentrate on this live video from starting to end. Now here I am writing, this is the class 11 physics. Class 11 physics, and it is in English medium and also in Hindi medium. So you have to follow it positively. Now it is based on NCERT pattern. NCERT pattern. Now here I will explain the chapter vector analysis. Vector analysis, and this is the chapter number 3. Chapter number 3. So I have to write here the topic. Now in this chapter I have to explain the cross product, vector product, vector product, vector product or cross product. In other words, in Hindi I can write here सदिशों का गुणनफल। So student has to concentrate on each and every student has to concentrate on this topic. That is, the topic name is vector product or vectors product or cross product. Now in Hindi that is written सदिशों का गुणनफल. So this is very important topic. Its concept I will define, and I will also write its general concept, and then I will also give some examples which will be available on this topic. Okay, so first of all I am going to take some vectors, and those vectors I will define how we have to take the cross product of two vectors. So first of all here I will write one vector that is in general form, that is ax vector I cap plus ay vector j cap plus az vector k cap. Similarly I will write other information also. So here I will go for solving it. I will say let
one vector I will say that is the vector ax, that is the vector ax, vector I cap plus by ay, vector j cap plus az, vector a cap. So this is the general vector. Now second vector I am considering here, that is the vector b, and it is written as bx vector I cap plus by vector j cap, and then I will write here bj vector a cap. So these are the two vectors. Now here I will say one vector is a value like this and other vector is a value like this. I will say this is the vector A and I will say this is the vector B. Now I will take its area. So I will take the cross product of vector A and B. Its rotation will be like this. So I will say this is the angle theta. So it is rotating anti-clockwise direction. In other words, I can say that its rotation will be in circle. Suppose that here I am considering circle. So here I will say this at this point vector I cap is a value, and at this point vector j cap is a value. Vector j cap is value, and at this point vector k cap is a value. So its rotation is like this. So I will consider here plus sign, and then here I will consider minus sign, and here I will consider plus sign. Okay, so I will take its cross product. Now here I am going to also explain its diagram in 3D. That is, along this I will say this is the vector I cap, along this I will say this is the vector j cap, and along this I will say vector k cap. So its rotation will be anti-clockwise direction. Its rotation will be anti-clockwise direction. So I will consider in first term plus, minus, and plus. I will consider according to this way. Okay. So this is the z axis, and z axis will be perpendicular to the vector I and also vector j. But blackboard is 2D, that is not, I cannot show the vector k cap perpendicular to both vector, that is vector on the vector I and also on the vector j. So in 2D I will draw like this. So this is the x axis, and this will be the y axis, and also this will be the j axis. Okay, so this figure I have also drawn like this. So the intersection point is origin. So here I am going to erase this one, and after erasing I will take its cross product. So here I have to take the cross product of the vector A into vector B. So it will be as. So I will write here in the modular sign. Here I will say this is the vector I cap, this is the vector I cap, and then I will write here vector j cap, and then I will write here vector a cap. Now here I have to put modular sign in the vector A, the coefficient of vector I cap, and also the coefficient of vector j cap, and similarly the coefficient of vector k cap I will write similarly. So here I will put ax, ay, az. Similarly I will consider vector b. So vector b has coefficient, that is the coefficient of vector I cap is bx, coefficient of vector j cap is by, and coefficient of vector k cap is bj. So its coefficient I will write here properly. So that will be bx, by, and bj I will write properly one by one. Okay. So this is the cross product of vector A and vector B. So here I have to take the area
area of this parallelogram. So area of this parallelogram I can obtain by using this concept, that is vector A cross vector B, which is equal to, I will write in the modular sign vector I cap vector j cap into vector k cap. Now here in the vector A, the coefficient of vector I cap is ax and coefficient of vector j cap is ay and coefficient of vector k cap is aj. Similarly, here vector B I have written, so I will write the coefficient of the vector I cap is dx and coefficient of vector j cap is dy and coefficient of vector k cap is dz. So I have written here. Okay, if two vector will be given, if we have to get the area both vector area of a parallelogram, so I can take the cross product of these two vectors, that is cross product of these two vectors are vector products. I will take is the vector products I will take, and then I will get a value, and that value will be the area parallelogram. Okay, now further its simplification I can write. First of all, here I have to write vector I cap, and then I will take this column and this row I will eliminate. So I will get this row and this column. So I will multiply ay bj. So here I will multiply ay bj, and then I will put here minus sign itself. So we have to remember. Now then I will put here by az, by az. So here I have written it. Okay, so we have to follow it positively. So here I will close the bracket, and then I will put minus sign, because here this is plus sign, this will be plus sign, this is minus sign, and this will be plus sign. So I has plus sign, but j will have minus sign. So here I will put minus sign. So here I am putting arrow. So you concentrate on this point, because this is important. Therefore I will write here vector j cap. Vector j cap in the bracket I will write. So j column I will eliminate, and also first row I will eliminate. So I will get this one and this one value. So I will write there ax bj. Here I will write ax bj, ax bj, and then I will put minus sign ax bj, that is I will write dx az, and then I will write here dx az. So I will write here. So I will close the bracket, and then I will write third vector, that is a cap. Again I will take this column, I will eliminate this column, and first row I will eliminate. So I will get this value. So I will put there az, ax by, ax, and then by. I will write ax into by, and then I will put there minus sign, and then I will write dx ay, dx ay. So this is the required expansion of this modulus term. So if vector a will be given, so I will write first of all in the modulus sign vector I cap, vector j cap, and vector k cap, and then I will write all coefficient of the vector a, that is ax, ay, az, and then I will write all coefficient of vector a, dx, dy, and dj, and its expansion I will do like this. Here vector I cap I will write in the bracket, I will leave this row, this column, and first row. So I will get this value. So I will write that ay bj minus, here minus sign I will put itself minus, always will be minus by az. So by az I have written. So here this anti-clockwise direction I will follow. This will be I plus, and then minus, then plus. So here I will put minus, and then I will write here I have taken vector j cap. So j cap column I will eliminate, and first row I will eliminate. So I will get ax bx and az bz. So I will multiply ax bj,
ax bj, and then I will put there minus sign, and then I write bx aj, and then again I will take k, so this will be plus sign here, k, and then this column I will eliminate, and then first row I will eliminate. I will get this value ax bx ay dy. So I will multiply ax into by. So here I have written ax into by minus bx into ay, dx into ay. So this is the concept of extension of the this model sign. So we have to get cross product of a and b with this formula. So this is the required concept, and each and every student has to concentrate on this stuff, because if the student will concentrate on it, so each and every question can be solved, which is related to vector products or cross product of two vectors. So this is the required concept, because if I will take the cross product of two vectors, that will be also a vector, because that vector can be obtained by this way. Okay student, I hope that you are doing very well. So its formula I will write. Okay, so here this information I will erase, and after erasing I will explain its formula, and then I will solve some numericals. Okay, because we have to get the value of a cross b. So a cross b that can be obtained by this way, because this the meaning of this term is the area of the parallelogram, because here I am looking, this is a parallelogram. This because parallelogram has four sides. So this side and this side, both sides are parallel to each other, but length will be same, and this side will be parallel to this side, because here I am not clearly mentioned, but this side and this side, both sides will be parallel to each other, and length will be same. Similarly, this side and this side will be parallel to each other, and length will be same. So I will take its cross product a cross vector b. That will be also a vector. That will be also a vector, and that vector I will consider with here. So this is a vector, because if I will rotate anti-clockwise, so its direction will be upward, and that upward direction I have to consider with vector n, because type is if any vector which has type, it means that is a unit vector. That unit vector is represented with a vector n, that which is equal to vector n divided by vector n from 92. That will be the unit vector. That unit vector will be represented with chi. Okay, and later will be from a to j. Okay, so that is the concept of unit vector. Now here I will write the formula of vector product. It means that I will write here a cross b. A cross vector a cross b, that will be magnitude of the vector a into magnitude of the vector b into I will write sin theta, because the angle between these two vectors is theta. Here I have written theta, so its theta will have sin. So it will be a unit vector. So the cross product of two vectors will be vector. So this is the formula, and we have to remember it, because this is important. Okay, if we have to get the angle between two vectors, but we have to take the cross product. So I will use cross product a cross b, which is equal to magnitude of the vector a into magnitude of the vector b into sin theta, and vector n is representing also a vector. This is also vector, but its direction will be along I-axis. Okay, so this is the required concept, and we have to follow it positively. Now here I have to take the cross product of a into b, that will be magnitude of the vector a into magnitude of the vector b into sin theta. Okay, so you have to follow it positively, because if angle we have to calculate, so if a cross b I will calculate with this formula, that because a cross b that is written like this, and extension of this term is given with this way. Okay, so I will get a cross b, and also I will take the magnitude of the vector a and also magnitude of the vector b, and this sin theta, how much theta will be, so with this formula I can get, but this is a unit vector, so its value will be 1. So I will take its modulus. So after taking its modulus, I will take its
modulus value because a vector is given, so the modulus of that vector will be in the square root ax square plus ay square plus z square. So I will take all sum of these three vectors coefficients, the sum of all coefficient of these three vectors, and then I will take the its square root. Then I will get a value, and that value will give the magnitude of the vector a cross b, because a cross b is also written as vector magnitude of the vector a into magnitude of the vector b into sin theta, and this is the unit vector. It is representing the direction of the vector product या direction of the cross product. Okay student, so you have to follow it easily. So this is the formula. Each and every student has to remember this formula clearly because it will help you. So you have to write the information on your notebook and that will enhance in your life. Okay, so this is the first formula and this is the second concept, because you will take the cross product of two vectors, so you have to arrange like this, and after arranging like this, then you have to get its value in the vector form. So after getting its value in vector form, then you will take its model sign. So after getting its model sign, so you are very well, if any vector is given, how you have to take the magnitude of that vector. Okay, with the help of that concept, you have to get the magnitude of the cross a cross b. Okay student, so this is the required concept, and this concept you have to follow positively. Okay, now all this information I will translate in Hindi, so each and every student can understand in Hindi, because if student who are reading in Hindi medium या in UP board, so those student can also understand each information in detail. Okay, यहाँ पर कहा गया है कि सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट का मतलब था गुणनफल, अब वेक्टर का मतलब सदिश। तो यहाँ पर वेक्टर लिखा है तो सदिशों का गुणनफल, या इस सदिशों का गुणनफल को इंग्लिश में दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो एक सदिश हमने एज्यूम किया है कि वेक्टर ए है, दूसरा सदिश वेक्टर बी है। इस दोनों वेक्टर का जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को सबसे पहले एक जो होता है इस मॉडल साइन के अंदर में लिखते हैं, क्योंकि हर वेक्टर में कुल होता है 3 वेक्टर होता है, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और एक जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर आई को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर जे को रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर के को। उसके बाद से यहाँ पर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के सारे कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे, आई के कोफिशिएंट को, जे के कोफिशिएंट को और के कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। उसी तरीके से ये क्रॉस है तो क्रॉस हो गया वेक्टर बी में जो आई के गुणांक है उसको लिखेंगे, वेक्टर बी में जो जे का गुणांक है उसको लिखेंगे, या वेक्टर बी के का गुणांक है तो के गुणांक लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। उसके बाद से हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलाउंग आई वेक्टर कैट होता है, तो वाई एक्सिस के अलाउंग वेक्टर जे कैट होता है और के एक्सिस के अलाउंग वेक्टर के कैट होता है। तो इसमें जो होता है आई को हम प्लस लेते हैं, जे को माइनस लेते हैं, के को भी प्लस लेते हैं। तो इस तरीके से हम अगर आई को लिए हैं तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो हमको मिलेगा ए वाई बी वाई ए जे बी जे। तो ए वाई इंटू बी जे माइनस करते हैं, माइनस हमेशा लिखेंगे, ए बी वाई ए जे। उसके बाद से यहाँ पर माइनस है तो माइनस जे लिखेंगे। उसके बाद से जे कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, ए कॉलम को हटाएंगे। उसके बाद से फर्स्ट रो को हटाएंगे। उसके बाद ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड मिला तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से प्लस, यहाँ पर प्लस साइन हो गया तो प्लस के लेंगे। उसके बाद से के कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट होकर उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद से फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे, उसको मिलेगा ए एक्स बी एक्स और ए वाई जी डी वाई। उसके बाद ए एक्स डी वाई माइनस करेंगे बी एक्स ए वाई और इसके वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। इस तरीके से जो होता है, इस तरह के जो डेटा हमने अरेंज किया उस डेटा को इस तरीके से हम एक्सपेंशन में विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन का मीनिंग होता है विस्तार करते हैं। ओके, तो ए क्रॉस बी
को जब हम सिंप्लीफाई किए वो एक वेक्टर मिला है। अगर इसके लिंक को कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड साइन लेंगे और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम जानते हैं उस वेक्टर में वेक्टर आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करते हैं और तीनों को कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करने के बाद से ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, उसका उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ओके स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू दिस वे वी हैव टू फॉलो इट पॉजिटिवली। ओके नाउ, तो ये कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किया। अब इसमें जो विशेष टर्म होंगे, विशेष कंडीशन होंगे, उन विशेष कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो पॉजिटिवली हम ये जितने भी इंफॉर्मेशन है इन सभी इंफॉर्मेशन को इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से जो है इसका जो कंडीशंस होते हैं, कंडीशन शर्तें होते हैं, उन शर्तों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आई एम गोइंग टू इरेज इट पॉजिटिवली एंड सेफली for explaining its condition. Now this is the formula of vector product across product. Each and every student has to remember this formula. Now condition number 1, here I will write conditions. So in condition I will say this is the condition number 1. If I take I cross I vector I cap into vector I cap, so here I will say its value will be 0 because its value will be 0 because here I cross I means I magnitude of the I into magnitude of the I into the angle between these two vectors, because one vector is I and other vector is also I will take its cross product. The angle between these two vectors will be 0 degree. So sin 0 degree which is equal to 0. So here I will say sin 0 degree which is equal to 0. Okay student, so I will say its value will be 0. And second vector I will consider, that is vector j cross vector j cap. So these two vectors will also have angle between these two vectors, that will be 0, and sin 0 degree that will be also 0. Similarly I will say one vector is k and other vector is also k, and I will take its cross product. So angle between these two vectors will be 0. So sin 0 degree that will be 0. So its value will be 0. So each and every student has to follow this concept. If I will take cross product of the same vector, so value will be 0. I cross I that will be 0, j cross j that will be 0, and k cross k that will be also 0, because these two vectors has angle 0 degree. So sin 0 degree is 0 because in the cross product या vector product I will remember the formula A cross B which is equal to magnitude of the vector A into magnitude of the vector A into sin theta, and this real type vector is representative direction of this vector. So second condition I am also going to say one vector I will say that is I cross vector j, so its direction will be k. So here I will write its direction will be vector k. Now I will take vector j cap cross vector k, so its value will be I cap, vector I cap, because here I will multiply I cross j, so its direction will be k, and j cross k its direction will be I j k cross I its direction will be j. So I will use this term. So other will be vector I vector k into vector I cap, its value will be vector j. So we have to remember it, because when I was explaining with you scalar product of two vectors, so in that case I have explained a dot vector b, vector a dot vector b which is equal to the magnitude of the vector a into magnitude of the vector b into cos theta. So there I have explained a vector a dot vector b, that is the scalar product.
product, but A cross B, that is the vector product, because magnitude of the vector A into magnitude of the vector B into sin theta, and n is representing the direction of this scalar value. So n is along the I-axis, okay, that is x-axis, and x-axis, along x-axis I is representing the vector I here, okay. So these are the two concept and we have to follow it positively, okay. So this is the cross product of two vector I have represented here, and its diagram I have shown with you. So properly you make its diagram, and also you write this formula, and it's these are the particular cases, that is the particular conditions of the formula. So positively you remember it, because if I will solve some numericals, so this concept will be we will apply here. So if you will know it, so there you will get no any issue for solving the question, okay student. So positively I will erase this concept, that is this theory, and then I will write one numerical, and after writing one numerical, then I will find the area of the parallelogram, okay, by using the cross product, okay student. So you follow it positively. Now further I am going to erase, I explain this information in Hindi, so student who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those student can also understand this information in detail, okay. So यहाँ पर कहेंगे कि दो सदिशों का प्रोडक्ट है या दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको हम ए क्रॉस बी के रूप में लिखते हैं। ए क्रॉस बी का वैल्यू आता है, ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं इनटू साइन थीटा रखते हैं, या एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ से वेक्टोरियन से मल्टीप्लाई करते हैं, या इनकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है जो वेक्टर आई टाइप के अलॉन्ग होता है, ओके। इसमें एक कंडीशन ये रखते हैं कि वेक्टर आई इंटू वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, जब हम देखते हैं कि वेक्टर आई और वेक्टर आई के बीच का एंगल जो होता है 0 डिग्री होता है, और जब इस फार्मूले में रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए आई क्रॉस आई का वैल्यू 0 होगा। उसी तरीके से जे क्रॉस जे का वैल्यू 0 होगा, उसी तरीके से के क्रॉस के का वैल्यू 0 होगा। इसलिए सबको जब राइट करके एक जगह पर लिख लिया कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस के, ऑल वैल्यू विल हैव 0। लेकिन आई क्रॉस जे करते हैं तो इसमें जो होता है हम कहते हैं कि आई क्रॉस जे, इसका मीनिंग यह हुआ कि ये आई और जे के बीच 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है, और अब वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और यहाँ पर वेक्टर जो यहाँ पर आई और जे है इसके अलावा से वेक्टर क्या होगा ए, तो ये वेक्टर के को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से जे और के बीच में 90 डिग्री होगा, उसके इसमें इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर वेक्टर एन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर नहीं वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। आई और के है तो आई, जे और के है तो आई हो गया, के और आई है तो यहाँ पर जे हो जाएगा। इसलिए इसको पॉजिटिवली हम फॉलो करेंगे। अब जहाँ पर न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड होगा वहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे, ओके स्टूडेंट। सो पॉजिटिवली आई विल इरेज दिस, एंड आफ्टर इरेजिंग आई विल राइट some questions, and those questions I will solve easily, okay, by using the cross product of two vectors या vector products, okay students. So you follow it positively. So I am going to erase it, and after erasing then I will write question, and after writing question I will give its solution in detail, okay. Now here question number 1 I am going to write find the area of a parallelogram whose different sides are given in vectors form as well. Parallelogram. Okay. So here I will say vector A. Vector A which is equal to
minus I plus 2 vector j minus 3 vector k, and another vector that is vector b 4 vector I cap plus 2 vector j cap 4 5 vector j cap minus 2 vector k cap. So we have to find the area of the parallelogram whose different sides are equal in vector form as below. यहाँ पर दिया गया तो we have to find area of the parallelogram, area of a parallelogram which is equal to I write vector A cross vector B. This is the line, and here I will take its modulus sign. So first of all, I will take the cross product of vector A and vector B. Okay, and after getting its value, I will take also its modulus sign. So that model sign that will give its value, and that value will be the area of the parallelogram. Okay students, so first further I am going to write it. So I write in the model sign that is vector I cap, and then I write vector j cap, and again I write vector j cap. So we have to write the coefficient of the vector A. So coefficient of the vector A, I have to write coefficient of vector I is -1, coefficient of vector K is 2, and coefficient of vector K is -3. I have written there. And also we have to write the coefficient of the vector B, that is the coefficient of vector I is 4, so here I have written 4, and coefficient of the vector J is 5 in vector B, and coefficient of the vector K is -2 in vector B. Okay, so area of the parallelogram I have to use formula that is and A cross B, and then we have to take modulus sign. First of all, I will consider this value, that is I will write parallelogram. So here I will put this equal sign. So I will calculate its value, and after calculating its value I will simplify. Okay, so again I will use here modulus I can use. So here I will define. So here I will put in the modulus sign, that is vector I cap, and then here I have taken vector I. So this column I will remove, and this row first row I will remove. So 2 into -2. So in the bracket I will write 2 into -2, and minus sign I will put it same, and then I will say 5 into -3. So here I will write 5 into -3, and then I will write here terminated. Okay, so student has to follow this concept. Okay, again I will put here vector minus vector j cap. So in the bracket I will write vector j cap, column I will eliminate, and first row I will eliminate. So -1 into -2. So here I will write -1 into -2, and here I will put minus itself, and then I will say -3, 4 into -3. I will write in the bracket, and then I will put here curly bracket, and then again I will write for the vector A. So I will put here plus sign, and then I will write here vector A, and in this curly bracket I will write. So vector K I have taken. So this column and this row I will first row I will take it. So 5 -1, 4, 2, and 5 are available. So I will multiply -1 into 5, and then I will put here -4 into 2. So this information I will write in curly bracket. So this is the area.
area of a parallelogram. So by using this concept, I will find the area of parallelogram, because here model sign I have put, so this concept I will use, because I will simplify an internal model sign and then I will take its modulus. Okay, student. So I hope that you are understanding very well. If you are understanding very well, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues and students, so that they can also update, that it improve their knowledge on this topic. And simultaneously you also subscribe this educational channel more and more. So educational channel name is RANA SIR UP KUSHINAGAR to follow it. Okay. Now I have calculated area. So above data I will erase after erasing. I will write the value information in detail. That model sign I have to use here. I will write vector I cat in the bracket I have to write 2 into minus 2, that will be minus 4, and here minus into minus, that is plus, so 5 into 3, that is 15. Okay, so here I have to write minus vector j, and j in the bracket I have to write minus 1 into minus 2, that will be 2, and here minus and minus, that is plus, so 4 into 3. So this is the because here I have taken k, so it's minus 1, 4 into minus 3. Here I have to make it minus 3. So here 4 into 3, that is 12. I have to write 12, and then I will write a cat, and then its value I will write minus 1 into 5, that is minus 5. So I have to write minus 5, and then minus the value, so 4 into 2, that is 8. So I have to get it. Okay. So zero data I erase, because I have to get zero value. Okay. So here I have to get area. So modular sign is very there. So here I will subtract 15 minus 4, that is 11, vector I cat, and here 12 plus 2, that is 14, vector j cat, and then I have to write here 8 minus 8 minus 5, that is minus 30, vector k cat. This is the vector I have obtained with the help of cross product. Okay. Now we have to take area, so I have to take its modulus sign. Now one information I am going to explain, if any vector is given in geometry form, that is ax vector I cat plus ay vector j cat plus az vector k cat. This is the example I am going to explain. If I have to take its modulus sign, so its value will be like this. I will here square, and here I will write the coefficient of vector I cat whole square, that is ax whole square, and plus sign I will put itself, and here I will write the coefficient of vector j square, that is ay square, and then I will put here the coefficient of vector k, that is aj square. This is the modulus values. Here I will write mod of vector a. Okay, because area is the mod. I have already given here modulus, so I will put in modulus. So this formula I have to use. So you remember it positively, because this concept you will inherit in your future better. Okay, so you have to follow it positively. Now I am going to erase this one, and after erasing this one, I will follow same concept to find its value. Now this model sign is going to give minus 5, that is the value, so model sign will give plus value. If here is plus 6 is the value, so model sign give plus 6. Okay, plus value is a value, so modulus will give plus value, but minus value is a value, so modulus will give plus value. Okay, so similarly this will be plus value, so in this square I will write ax whole square, that is 11 whole square, plus here I will write minus 14 whole square, and plus here I will write minus 13 whole square. So this is the area. So I will summarize it. Now 11 whole square, that will be 121. Now 14 whole square, that will be equal to 196, and here 13 whole square, that will be
30 into 30, 30 into 30, 30, 30, that is 69, that is 69, and 40, 48 into 14, that will be here will be 4, so here I will have 6, 9, 1, so that will be okay. Okay, so I will take its summation. Okay, so firstly I am going to take its sum. So one is 141, other is 196, and other is 169. So I have to take its sum. 9 plus 6, that is 15, and 116 plus 6 carry will be 1. So 2 plus 11, 11 plus 6, 17, 188. I will get 31, 1, 2, 3, 1, 4. So here I write in the next step, that will be in square root 486 square square unit. I have to write square unit. This is the area of a parallelogram. Okay, so I will say this is the answer of my related question. Okay, students, so you have to solve it positively. If any two vector will be given, so we have to take cross product of those vectors. So that will give the area, because when we will calculate the area of two vector, that is A cross B, which is equal to magnitude of the vector A into magnitude of the vector B into sin theta, because theta is the angle between two vectors. One vector is A and other vector is B, and there I have to use their vector n cap, that is the unit vector, and that vector is along the vector I. Okay, so we have to solve it positively. Okay, because here I have written their vector cross product of two vector, that is vector A cross vector B. I have written there easily, so that information I have to write. One is the vector A cross vector A, which is equal to, I have to write there magnitude of the vector A into magnitude of the vector B into sin theta, and there one vector is available. So if I write, so vector A is also written with A, so I will write there A cross B. A cross B, it means that this is the vector A and this is the vector B. So I will write AB and sin theta, and one vector will be there here. So this is the cross product of two vectors. One vector is A and another vector is B. So each and every student has to remember this formula, because this formula is the vector product, cross product of two vectors. But before, in previous classes, I have already explained dot product of two vectors is a scalar quantity, but here cross product of two vectors is a vector quantity. So we have to differentiate all these two formulas, because in the formula A dot B, that will be scalar quantity, but here if I will take A cross B, that is the vector quantity, unit vector is available there. So you have to remember it and also differentiate it, because if the two vector will be available, so I will get theta with the help of sin trigonometrical function. But in the case of scalar product, that is A cross A dot B, in this case I will get the trigonometrical value, that is cos theta, because theta can be calculated with the help of cosine formula. Okay, so we have to differentiate these two formula to find the angle and also other informations. Okay, so when in the scalar product, that is scalar product, I was writing vector I dot I into is equal to vector j dot j, and also vector k dot k, which is equal to 1, because there is cos 0 degree, that is 1. But when I will use vector I dot j
and j dot k and k dot I. So angle between these two vector will be 90 degree, and so 90 degree I will put there 0. So all the product of different vector will be 0. So I have to remember, but in the case of scalar product, same vector will have one value, but different will have different vector. That is I and j vector I will take. So I will get another vector k, and in second case I will say one vector I am going to take k, and other vector I will take k. So I will take its cross product. So I will take its value will be vector I, and when k and I will take, so its value will be j. So I will take the cross product of the vector k into I, so its direction will be along vector j. So that concept I will also add to solve the question in the numerical. Okay, so a two vector will be given, so we have to get the area of the parallelogram, because parallelogram will have opposite sides equal, and diagonal will both diagonal will bisect at same point, but the diagonal length is divided with another diagonal, so length will be equal corresponding to each other. Okay, we have to use that concept here also. Okay, now further I will explain all these information in Hindi, so student who are reading in Hindi medium, those student can also understand all these information clearly. Okay, now यहाँ पर कहा गया है कि अगर दो वेक्टर दिया जाएगा तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो वह क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक समांतर चतुर्भुज के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। उस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्रॉस बी निकालेंगे, उस एक क्रॉस बी निकालने के बाद से हमको एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का जो हम नई परिणाम लेंगे, उस परिणाम को उस पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज उस एरिया के लिए किया, इस वेक्टर का जो हम परिणाम निकाले, परिणाम हमको ये मिला है √486 स्क्वायर यूनिट मिला है। तो उस पैरेललोग्राम का जो वेक्टर हमें दिया था, उस वेक्टर का जो था एरिया जो था पैरेललोग्राम का, हमको ये मिला √486 square unit. Okay, student, so according to this way we have to use, that we have to follow to solve this information. So हम सारे इंफॉर्मेशन जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में है तो वन टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट जो तब प्रॉपरली अपने नोटबुक में लिखेंगे उनको रिमेंबर करेंगे, और जो भी क्वेश्चन जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट से पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से जो होता है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो यू फॉलो इट क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। सो हियर आई हैव टू राइट इंफॉर्मेशन of the cross product या vector product, vector products or cross product. So here I have to consider one vector is A and other is vector B. So its value will be magnitude of the vector A into magnitude of the vector B into sin theta, and here I will write to the vector यहाँ। ओके, सो हम जानते हैं कि वेक्टर A को डॉट A से लिखा जाता है, इसलिए हम लिख सकते हैं A क्रॉस B विच इक्वल टू AB sin थीटा इंटू वेक्टर M। तो ए जो होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, बी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ए लिखा गया है तो ए का मैग्नीट्यूड बी लिखा है, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर एन वेक्टर एन है, एन काट लिखे हैं, इस वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को पॉजिटिव जो होता है आप रिमेंबर करेंगे। ओके, अगर यहाँ पर कहा गया कि अगर दो वेक्टर है, एक पहला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन हम कहेंगे कि अगर वेक्टर आई है और वेक्टर आई के
उससे लेकर के क्रॉस करते हैं तो इनके बीच के एंगल जो होता है 0 डिग्री होगा और साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, इसलिए सेम वेक्टर रहेगा उसका वैल्यू 0 होता है। उसी तरीके से वेक्टर जे लेंगे, क्रॉस वेक्टर जे लेंगे तो इनके बीच के एंगल जो होता है 0 डिग्री होगा और जब 0 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू साइन 0 होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। इसी तरीके से हर केस में वेक्टर के इनटू वेक्टर के बनता है, ये सभी के वैल्यू जो होता है 0 होगा। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक वेक्टर आई ले रहे हैं और दूसरा वेक्टर जे ले रहे हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट जे जो होता है वह एक टेक्निकल के होगा, क्योंकि इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, वेक्टर जे का भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, लेकिन ये साइन थीटा दोनों वेक्टर के बीच के एंगल 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री 1 होगा, या ये वेक्टर ये हो जाएगा वेक्टर। इसी तरीके से आई जे रहेगा तो के हो जाएगा और जे वेक्टर के क्रॉस रहेगा तो आई हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे कि वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई रहेगा तो इसके लिए वेक्टर के होगा। इसलिए इसको हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह वेक्टर आई है, आई कैप, ये वेक्टर जे कैप है और ये वेक्टर के कैप है। सो अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो के होगा के क्रॉस आई, जे क्रॉस के करेंगे आई होगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के होगा। इसलिए इस तरीके से ऊपर जे कर सकते हैं। ओके, और ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है, अगर इसका वैल्यू निकालना होता है, हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किए थे कि इसका वैल्यू निकालना तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर आई कैप, उसके बाद से लिखेंगे वेक्टर जे कैप, उसके बाद से लिखेंगे वेक्टर के कैप। इसको मॉडल साइन के प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में, और यहाँ पर वेक्टर ए है, इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे वेक्टर ए के कोफिशिएंट को वेक्टर ए एक्स ए वाई, वाई के कोफिशिएंट को और ए जेड लिखिए। तो वेक्टर ए के सारे कोफिशिएंट को हमने यहाँ पर लिखा है, कोफिशिएंट का हिंदी होता है मान। उसी तरीके से वेक्टर बी के कोफिशिएंट को लिखिए बी एक्स बी वाई और बी जेड, और इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है, इसका एक्सपेंशन जो होता है ऑलरेडी मैंने किया था, उस एक्सपेंशन से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेबिट हम ले सकते हैं आई कैप, और आई की जब लेंगे तो आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करेंगे और फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे, तो हमको ए वाई ए बी वाई ए जेड बी जेड मिल जाते हैं। ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड लिखेंगे। यहाँ पर माइनस साइन अपन से पुट करते हैं, यहाँ पर के लिखेंगे, वेक्टर के कैप जे कैप लिखेंगे। यहाँ पर जे कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड, ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड बी एक्स ए जेड। उसी तरीके से फर्दर यहाँ पर वेक्टर के कैप लिखेंगे, के कैप के लिए इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट को एलिमिनेट ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई माइनस ए जे ए एक्स बी वाई, सो ए बी एक्स ए वाई। यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स और ए वाई, इस वैल्यू को हम लिखना। इस तरीके से अगर एक क्रॉस बी का वैल्यू निकालना होता है तो ये जो होता है एरिया क्षेत्रफल को देता है, ये पैरेललोग्राम का समांतर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल को देता है कि क्रॉस बी। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डिटरमिनेंट के पास में। अब वेक्टर आई कैप लिखेंगे, वेक्टर ए का वेक्टर के कैप। यहाँ पर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के सारे कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे, सारे कोफिशिएंट को दर्शाएंगे। उसी तरीके से वेक्टर बी है तो वेक्टर बी के सारे कोफिशिएंट को दर्शाएंगे। उसके बाद से हम वेक्टर आई लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस ले लिए, और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे, ए एक्स बी वाई और ए जेड बी जेड मिले। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड माइनस करेंगे ए बी वाई ए जेड को यहाँ। उसके बाद से हम माइनस टर्म लेंगे, माइनस जे लेंगे तो माइनस जे के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम उसको फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी एक्स। तो ए एक्स बी जेड माइनस लिखेंगे बी एक्स ए जेड लिखेंगे, एक टर्म को लिखेंगे। उसके बाद से
थर्ड वेक्टर को लेंगे, ये थर्ड वेक्टर मेरा प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, इसको पॉजिटिवली हम फॉलो करेंगे। ओके, वेक्टर के लिखने, वेक्टर के लिखने के बाद से यहाँ पर इस के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करेंगे और फर्स्ट रो पे एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे ए एक्स बी एक्स और ए वाई डी वाई मिलेगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स डी वाई माइनस बी एक्स और ए वाई को हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम एक पार्टिकुलर वेक्टर पाएंगे, उस पार्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब ले लेंगे, जब उसका परिणाम ले लेंगे तो उस एरिया का क्षेत्रफल जो होता है हमें स्केलर के रूप में मिलेगा। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू फॉलो इट पॉजिटिवली। अगर इसमें कोई भी डाउट है, उस डाउट को या क्वेरी को या एनी इशू है इस टॉपिक के करस्पॉन्डिंग को पॉजिटिवली आप कमेंट करें और उस कमेंट को हम पॉजिटिवली ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद से आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एप्रोप्रिएट प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लाइव वीडियो। अगर जो स्टूडेंट जो का इस क्लास को मिस किए हो या किसी टॉपिक को मिस किए हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ यूट्यूब एजुकेशन चैनल है राना सर यूपी कुशीनगर, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में सभी डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया है। क्लास 12 के मैथमेटिक्स और क्लास 12 के फिजिक्स और क्लास 11 के मैथमेटिक्स और क्लास 11 के फिजिक्स के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किए हैं और उसको जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटी होता है पॉसिबल है उसको हमने बनाया है और दोनों मीडियम से एक्सप्लेन करके अपलोड किए हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में और आल्सो हिंदी मीडियम में। ओके स्टूडेंट, क्लास 10 के मैथमेटिक्स और फिजिक्स का डाटा भी वहाँ पे अवेलेबल है, पॉजिटिवली जो होता है वहाँ को आप पढ़ सकते हैं। दिस डाटा आर अवेलेबल फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, सो यू टेक इट्स एडवांटेज। ओके स्टूडेंट, सो ये सारे इंफॉर्मेशन जो कि सारे डाटा जो तक फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है तो पॉजिटिवली आप पढ़ें और अपनी नॉलेज को इनहेंस करें। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव वीडियो। जय हिंद, राना सर। नेक्स्ट टाइम आई विल मीट with you on the same time, that is 30 minutes past to 7 p.m. to 30 minutes past to 8 p.m. Okay, thank you. Jai Hind.